गुड आफ्टरनून एवरीवन। प्रीवियस क्लास रे हम माने कंपोजिशन स्कीम विषय देखिथिले। कंपोजिशन स्कीम अंडर मु तमानु सबजा प्रोविजंस कर सारथिली ऑलरेडी। ओके, तो आज टिके मु फर्स्ट रिवाइज कर यूज तमानु कंपोजिशन स्कीम तापर तमरो वैलिडिटी ऑफ कंपोजिशन लेवी अछि रूल 6 रे पढिया देन किसी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिया अछि। ओके, तो पूरा फिनिश हे जे हमर। ओके, तो पिला ने कंपोजिशन लेवी मु तमानु कोन कहथली कि कंपोजिशन लेवी नॉर्मली कोन रे स्मॉल टैक्स पेपर को एप्लीकेबल। ओके, नॉर्मली हमर जो लास्ट टैक्स पेपर मैंने अच्छे से नॉर्मल लेवी रे कौन करि कम्प्लेसेस करि परिए, बट छोटे छोटे बिजनेसमैन जाक तुम नॉर्मल कम्प्लेसेस करि परिए तो से लेसर कम्प्लेसेस पे हम कौन करछथि कंपोजिशन लेवी अप्लाई करछथि। ओके, से नहीं परिए कंपोजिशन लेवी कमान नहीं परिए, रजिस्टर्ड पर्सन मान नहीं परिए, बट एलिजिबिलिटी पे कोन अछि रजिस्टर्ड पर्सन रा टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर रे स्पेशल कैटेगरी स्टेट रे 75 लाख, नॉर्मल कैटेगरी स्टेट रे 1.5 करोड़ थियार अछि। ओके, स्पेशल कैटेगरी स्टेट रे हम कहथले कि मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम। ओके, ए सब या तमरो कोन नॉर्मली स्पेशल कैटेगरी स्टेट हमर टर्नओवर लिमिट केते 75 लाख। अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट समस्त टर्नओवर लिमिट 1.5 करोड़। कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करिया पे नाउ जे मैंडेटरी नहीं डाउच ऑप्शन तुम चाहे नहीं परियो न चाहे नहीं। देन आम जानते कि मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर हो, ना तो ओनली सर्विस प्रोवाइडर हो, से कौन मिले कंपोजिशन स्कीम मिले। मैन्युफैक्चर केस नाम देखी से नॉर्मली तार मैक्सिमम सप्लाई कौन हमार अच्छे गुड्स रो सर्विस होइले हबो नहीं, बट सर्विस अप टू सर्टेन लिमिट हे परियो। ओके, से लिमिट टा कौन तुम मान कहथि कि 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और 5 लाख व्हिचएवर इज हायर सेति मैक्सिमम कौन दे पारे सर्विस दे पारे, तापर आ सर्विस दे परिबा नाही। ओके, देन मु तमान कहथि पिलाने कि रेस्टोरेंट अब ट्रेडर केस रे नॉर्मल तमरा कोन से रेस्ट्रिक्शन नाही। ओके, सर्विस रो ठीक अछि से टाइप रो सॉरी मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर रो रेस्ट्रिक्शन अछि, बट कोन रेस्टोरेंट सर्विस रो रेस्टोरेंट सर्विस मनकर रेस्ट्रिक्शन से किछि नाही। ओके, रेस्टोरेंट्स हो कि मैन्युफैक्चरर हो कि ट्रेडर हो एमान को टर्नओवर लिमिट केते 1.5 करोड़, बट सप्लाई ऑफ सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट। ओके, ता तो ओनली जे कोन करथो सप्लाई ऑफ सर्विस करथो ता पे टर्नओवर लिमिट केते अछि तमरो 50 लाख अछि। ओके, ता तो 50 लाख को तमरो कोन रे अप टू 50 लाख ले समान कोन नै परे कंपोजिशन स्कीम नै परे। तापर मु तमानु कहथली कि जो मैन्युफैक्चर ट्रेडर्स मान जो सर्विस रो लिमिट अछि केते अछि 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट, 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट। तो नॉर्मली 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट हम कोन करि परिए 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और 5 लाख व्हिचएवर इज हायर जाय कोन दे परिए सर्विस दे परिए। क्लियर? तो मु तमानु कहथली पिलाने नॉर्मली जब तमे ए टू एच जाय बिजनेस रे थिबो ताहले तुम कोन रे कंपोजिशन स्कीम नै परिबो नाही। ओके, तार हम कहथली कंपोजिशन स्कीम पई कोन रेट अछि ना मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर केस रे 1% अछि, रेस्टोरेंट केस रे 5%, ओनली सर्विस केस रे 6%। बट नॉर्मली पिलाने तमर कंपोजिशन स्कीम जतन नबो तमे न्यू टैक्स तमर कोन हबो ना इनपुट जो आरसीएम बाबद रे जहा टैक्स आस्तियो से टैक्स तुमको कोन करियो पड़ो पेमेंट करियो पड़ो 156 आरसीएम पई एप्लीकेबल हबो नै। ओके, रेस्ट्रिक्शन तुम मान कहथली कि सप्लाई ऑफ सर्विस एंगेज हे परियन तमाने। ओके, इंटरस्टेट मूवमेंट करि परियनी गुड्स रो राइट, नॉन टैक्सेबल सप्लाई करि परियनी। ओके, देन तमे कोन इश्यू थ्रू सप्लाई करि परियनी, देन तमे कोन रे नोटिफाइड गुड्स जोडा पढिला हमें तार सप्लाई करि परियनी, आ तमे कोन सीटीपी एनआईटीपी हे परिबो नाही। आ तमन कहथली कि सेम पैन अंडर जदि डिफरेंट एंटिटी अछि ताले कोन इधर सब जा एंटिटी पैन नबो पड़ो न तो किछि भी मिलियो। ओके, देन तम एग्रीगेट टर्नओवर कहथली पिलाने एग्रीगेट टर्नओवर मान चारटा दिन से ऐड हबो। गोटे हबो टैक्सेबल सप्लाई एक्सक्लूडिंग आरसीएम, देन एग्जेम्प्ट सप्लाई एग्जेम्प्ट सप्लाई रे गोटे दिन से तमरा ऐड हबोनी कोडा इंटरेस्ट आउ डिस्काउंट। ओके, देन तमान कहथली एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ भी ऐड हबो, आउट स्टॉक ट्रांसफर जदि होची गोटे ब्रांचेस रो ब्रांचेस को सेडा कोन हबो ऐड हबो, बट सीजीएसटी एसजीएसटी यूटीजीएसटी आईजीएसटी सेल्स वगैरह कोन करियोनी तो माने ऐड करियोनी, और इंटरेस्ट ऑन लोन एंड डिपॉजिट कर भी कोन करियोनी रे ऐड करिवो नाही। ओके, तो एग्रीगेट स्टेट रो टर्नओवर एग्रीगेट भी तम नॉर्मली कोन सेम डेफिनेशन दिया जाय। ओके,
तापर कहते पिला जदि वर्षर कौन भी डेट रे जब तुम कौन हम टर्नओवर लिमिट क्रॉस हो जो 75 हो कि 50 हो कि 1.5 करोड़ हो तुमको कंपोजिशन लेवी मिलेबा नाही ओके देन नॉर्मली पिला ने तुम कंपोजिशन स्कीम नबो मान नॉर्मली कौन कर परिनी कार्ड टैक्स कलेक्शंस कर परिबा नाही ओके कार्ड टैक्स कलेक्शंस मागी परियो निज पॉकेट रो पैसा देबो पड़ियो आईटीसी में मिलियो जदि रॉन्गफुली नै थियो ताले कौन रेट पेनल्टी लागे ओके सेक्शन 74 73 74 ओके इंटीमेशन रे पढे दिली तुम आरईजी 01 पार्ट बी रे तुम कहया पड़ियो कि म कंपोजिशन स्कीम नबा चाहूची तापर जीएसटी सीएमपी 02 तुमको भरिया पड़ियो ओके तापर आईटीसी 3 रे तुमरो इनपुट टैक्स क्रेडिट जहां भी अछि आगुर ता डिटेल्स देबो पड़ियो ओके तापर तुमरो इफेक्टिव डेट फॉर कंपोजिशन लेवी तमान कहइतली जदि विदिन टाइम भीतर अप्लाई कर दोछो ताहले जेबे लायबल हबो सेबुडुआ कोन हिजियो स्टार्ट हिजियो कंपोजिशन स्कीम जदि विदिन टाइम भीतर अप्लाई करनो जेबे रजिस्ट्रेशन ग्रांट हबो सेबुडु कोन हबो कंपोजिशन स्कीम लेवी रो बेनिफिट मिलबो ओके तापर कंडीशन जे हम तमान कहइतली तापर अब देखिए वैलिडिटी ऑफ कंपोजिशन लेवी ओके देखो ठीक है पिलाने ओके देखो वैलिडिटी ऑफ कंपोजिशन लेवी कौन कहूची द ऑप्शन एक्सरसाइज बाय रजिस्टर्ड पर्सन टू पे टैक्स ऑन 10 shall remain valid so long as it satisfied all the conditions mentioned in the state section and under the rule ओके तार से कहूची कंपोजिशन लेवी केति जे वैलिड रहयो पिलाने जे पर्यंत तमाने सब जा कंडीशन को कोन करछो सैटिस्फाई करछो ओके जो भी रूल्स अछि बा जो भी कंडीशन अछि जेतो दिन तुम कोन करथरे से रूल्स बा कंडीशंस को सैटिस्फाई करथुवा कंपोजिशन लेवी से जाई कोन रहथुवा वैलिड रहथु ओके लेट्स से तुमको रूल्स को सैटिस्फाई करला लाइक इंटर स्टेट मूवमेंट कर देला न तो ई कॉमर्स थ्रू ऑपरेटर को कर देला सप्लाई कर देला तुम कोन रूल्स भांगिलो जदि रूल्स वंस ब्रेक हैला ताले कंपोजिशन स्कीम तुमको मिलबा नाही क्लियर तबे जेबे तुम रूल्स भांगियो ना सेबुड कोन पिलाने से पूछ कि 91 तुमको कोन देबो पड़ियो ना नॉर्मली ऑथरे टैक्स देबो पड़ियो ओके सेक्शन 10 रे नै कोन 91 माने नॉर्मल लेवी जिन होची नॉर्मल लेवी एंड कलेक्शन हम पढ़थिले से अनुसार तुमको कोन देबो पड़ियो टैक्स देबो पड़ियो ओके नेक्स्ट से कुछ such person shall be liable to pay tax under 91 from the day he ceases to satisfy any of the conditions mentioned in section 10 section 10 जदि तमे भूलभाल करछो फसी होछो ताले 91 तुमको देबो पड़ियो आ सब जगह प्रोविजंस तुमको टैक्स इनवॉइस में जहां जहां अप्लाई हो सब जगह प्रोविजन तुमको कोन अटैच है ओके तुमको अप्लाई है he shall also file an intimations for withdrawal from the scheme in form number GST CMP 04 within 7 days from the occurrence of such event जब तुमको लागिला कि नहीं कौन सी भी कंडीशन फुलफिल हलानी
ताहले तुम देखलो कंपोजिशन रो नॉर्मल स्कीम को आसी कंपोजिशन रो नॉर्मल स्कीम को आसी तुम 7 डेज भितरे फॉर्म नंबर जीएसटी सीएमपी 04 इंटीमेशन दबो कि नहीं मु कोन करछि कंपोजिशन रो विड्रॉल चाहूछि कंपोजिशन रो कोन रे विड्रॉल चाहूछि कंपोजिशन स्कीम रे रहबी नहीं तो तुम कंपोजिशन स्कीम मिलिबो नहीं ओके तो मु कोन नॉर्मल स्कीम रे आसी तो तुम इंटीमेशन रो जणाया पड़ियो गवर्नमेंट को कि मते कोन आउ कंपोजिशन स्कीम पाई मु एलिजिबल नहीं मु बे नॉर्मल स्कीम रे आसी ओके 7 दिन भीतर जणाया पड़ियो जेबे तमरो से घटनाडा हबो ओके नेक्स्ट The registered person who intend to withdraw from the composition scheme shall before the date of such withdrawal file an applicant in form number GST CMP 04 duly signed and verified through e-verifications electronical na the common portal तार से कौन पिलाने से को जो CMP 04 भरियो ना सेटा कौन इलेक्ट्रॉनिकली GST पोर्टल रे ही भरा ओके तो से सिंपल कहयो चाहू कौन तमे जान लो कि आज टेस्ट सपोज हवा आज होची के तरे 24 राइट 24 रे तमु जणा पड़ला कि तमे आउ कंपोजिशन स्कीम रे एलिजिबल नाउ 24 जणा पड़ला मन 31 अगस्त भितरे तमे जीएसटी सीएमपी 04 भरि दबो सेडी जीएसटी सीएमपी 04 कोन में भरा होची एंड विड्रॉल फ्रॉम द स्कीम ताले गवर्नमेंट को जणा पड़जो कि तमे कंपोजिशन स्कीम नबो नाही तमे नॉर्मल टैक्स पे रही जे 9 मंथ ओके तापर यदि प्रॉपर ऑफिसर रीजन टू बिलीव कि registered person was not eligible to pay tax under section 10 or has contravened the provision of the act or provision of this chapter, he may issue a notice to such person in GST CMP 05 to serve those within 15 days in receipt of such notice as to why the option to pay tax under section 10 shall not be denied. Okay, now suppose आप proper officer माने assessing officer को लागुची okay कि registered person दा eligible नथिला but कौन नहीं आइछ रे कंपोजिशन स्कीम नहीं आइछि तर से कोन करियो नोटिस पठा कागो रजिस्टर्ड पर्सन को के दिन रे ना से को जीएसटी सीएमपी 05 पे से ओटे शो कोज नोटिस पठा से को विदिन 15 डेज ऑफ द रिसीप्ट ऑफ सच नोटिस as to why the option to pay tax under section 10 shall not be denied okay that is simple कोछि कि प्रॉपर ऑफिसर यदि रीजन टू बिलीव अछि कि रजिस्टर्ड पर्सन एलिजिबल नहीं टैक्स पे करिया पे 10 रे नॉल तो रजिस्टर्ड पर्सन कोन करछि किछि कंट्रावेंशंस करछि एक्ट रे नंबर चैप्टर रे ताले से हम कोन सीएमपी 05 रे नोटिस पठाओ 15 दिन भीतर नोटिस पठाओ के दिन भीतर 15 दिन भीतर ऑफ द रेसिपिएंट ओके जेबे तुम से ताकू जेबे लागु तुम एलिजिबल नथिलो और ताकू जेबे लागु कि तुम कंट्रावेंशन करछो एक्ट अंडर रे से डेट रो 15 दिन भीतर से जीएसटी सीएमपी 05 रे तुम नोटिस पठाओ ओके कि तमे कोन पाई सेक्शन 10 कोन रे ऑप्ट करछो ताहे तमे लेखियो तमे कोन ना शो कोज नोटिस टा कोन गलो रिसीव करले से पूछि कि तमु कोन करियो पड़ियो ना अपॉन रिसीप्ट ऑफ द रिप्लाई टू द शो कोज नोटिस फ्रॉम द रजिस्टर्ड पर्सन इन फॉर्म नंबर जीएसटी सीएमपी 06 तमु 5 रा नोटिस आसला तमे कोन करियो जीएसटी सीएमपी 06 रे तार रिप्लाई दबो ओके जीएसटी सीएमपी 05 रे कोन रे रिप्लाई दबो देखो कोन होछि सिंपल जदि तमे निजे आडू विड्रॉल करछो ताहले तमे निजे जणा दो काहे रे जीएसटी सीएमपी 04 रे तमे निजे आडू विड्रॉल कर नथिला प्रॉपर ऑफिसर पासिंग ऑफिसर धरबला तमे से तमु नोटिस काहे पठाओ जीएसटी सीएमपी 05 रे नोटिस पठला मन तमु रिप्लाई देबार अछि काहे रे 06 रे so the proper officer shall issue an order in form number GST CMP तमे रिप्लाई देला पर से ऑर्डर दो काहे रे सीएमपी 07 रे के दिन भीतर 30 दिन भीतर तमरो जेबे रिप्लाई से रिसीव करियो तर 30 दिन भीतर से कोन दबो ऑर्डर दबो कि तमे 10 पय एलिजिबल ना तमे 10 पय एलिजिबल ना बुझि परलो घटना कोन हिची ओके तो तमहु 5 रे नोटिस आसियो तमे 6 रे रिप्लाई दबो 7 रे कोन रे लास्ट अप्रूवल आसियो कि एक्चुअली तमहु मिलियो कि नहीं ओके तमहु एक्चुअली मिलियो कि नहीं 7 रे से जणा पड़े जीएसटी सीएमपी 07 ओके next every person who has furnished an intimation or filed an application for withdrawal or a person in receipt of whom an order of withdrawal of option has been passed in form number GST CMP 07 may electronically furnish at the common portal either directly or through a facilitated center a statement in form number GST ITC 01 containing details of the stock of input and input containing semi-finished or finished goods held in stock by him on the date on which the option is withdrawn or denied
within a period of 30 days from the date of from which the option is withdrawal or from the date of order passed in the form GST 07 as the case may be. कौन कहला देखो 6 नंबर पॉइंट से कुछ पिलाने GST CMP 07 रे नॉर्मल तुमको कौन जणा पड़जियो कि तुमको कंपोजिशन स्कीम मिलियो कि कंपोजिशन स्कीम मिलिबा नाही तुमको वहां जणा पड़िया लागि कंपोजिशन स्कीम पे तुम एलिजिबल ना ताले कौन नॉर्मल स्कीम को आसीरी ए तुम दिन से किनी जानथियो कि नै तुम बिजनेस में स्टॉक जा पड़ी थियो तो गवर्नमेंट को चेडी काम करा तुम पाखे जति भी इनपुट अछि इनपुट माने कोन रे स्टॉक जति तुम कोन करछ परचेज करछ तार आईडीसी तुमको मिली जियो तमे तुम कंपोजिशन स्कीम रे कोन रहियो ना बे कंपोजिशन स्कीम कोडी पळासियो नॉर्मल स्कीम को आ कंपोजिशन स्कीम नॉर्मल स्कीम को पळासियो तुम सब हजार कोन दे दी आईडीसी दे दी सेत पे से गवर्नमेंट को छि आईडीसी 01 जीएसटी आईडीसी 01 फॉर्म रे भरी दियो कि केति तुम पाखे इनपुट अछि केति तुम पाखे इनपुट रॉ मटेरियल अछि केति तुम पाखे इनपुट रो सेमी फिनिश गुड्स अछि केति तुम पाखे इनपुट रो फिनिश गुड्स अछि सब दार तुमको आईडीसी दे या तुम जदी टैक्स जदी नॉर्मल स्कीम रे दबो आईडीसी मिलियो कि नै तो गवर्नमेंट को आईडीसी 01 रे भरि दियो तुमको कम देबी आईडीसी देबी केबे जीएसटी सीएमपी 07 परे तो सीएमपी 07 परे का हम जणा पड़ियो एक्चुअली कोन जणा पड़ियो कि हमें कंपोजिशन स्कीम रो बाहर हेले ए कंपोजिशन स्कीम रो अछन যদি বাহির হলে তাহলে আমি কোন দেব ইনপুট ডিটেইলস দেব তাকি हमको आईडीसी मिल पारी ओके then any intimation or application for withdrawal or denial of the option to pay tax under 10 in respect of any place of business in any state or union territory shall be deemed to be an intimation in respect of other place simple way तम तीनटा ब्रांच अछि गोटे ब्रांच को इंटिमेशन मिलला माने ता अर्थ कि तीनटा जा ब्रांच कोन मिलछि इंटिमेशन मिलछि बुझि परछ तो पूरा होल स्टोरी कोन सिंपल तमे जदी निजे विड्रॉ हो चाहछो आराम से निजे भर दियो फॉर्म विड्रॉ हे जो नाय जदी असेसिंग ऑफिसर धरछि तमकु बस नोटिस पठे 5 रे तार नोटिस रिप्लाई देबो बुडियो लेते 6 रे रिप्लाई देला 30 दिन पर से डिसाइड करियो 7 रे जब से डिसाइड करछ तो मिलियो नि तार आईडीसी डिटेल्स हम देबो पड़ियो ओके आ जदी गोटे ब्रांच को एप्लीकेबल होला माने एंटायर एंटिटी कोन हे रे एप्लीकेबल हे जे बुझियो न माने कोन क्लियर पूरा ओके नेक्स्ट देखो पिलाने हमरा इफेक्टिव जा अछि देखो दिन कहै छी 1 नंबर टा ए पर्सन availing composition scheme during a financial year रो एडम हम कहि दिथली ओके देखो नॉर्मली suppose a person availing CS during a financial year crossed the turnover of rupees 150 lakhs upon rate 75 lakhs during the course of the year. That is, say he crosses the turnover of rupees 1 lakh 50 and 75 lakhs in December. केबे क्रॉस होला रे December रे ओके तमे आंसर once तमर टर्नओवर क्रॉस होला माने तमे कंपोजिशन स्कीम मिलबो नाही कोडी पळा आसे नॉर्मल स्कीम गसियो ताहा से पूछी will he allow to pay tax on the composition scheme for the remainder of the year that is till 31st March तम जानछ पिलाने कोन ना once तमरो टर्नओवर क्रॉस होला माने तमु कंपोजिशन स्कीम मिलिबो नाही तब से पूछी नो कंपोजिशन स्कीम मिलिबो नाही तो एग्रीगेट टर्नओवर कोन होला रे क्रॉस होला हम जानछ यदि कंपोजिशन स्कीम मिलियो कोन करियो पड़ियो जीएसटी सीएमपी 04 रे 7 दिन भितरे तुमको जणायो पड़ियो कि मो कंपोजिशन स्कीम पे एलिजिबल नाही ता परे तुम पाखे जति सब स्टॉक अछि तार डिटेल्स देबो पड़ियो जीएसटी आईटीसी 01 रे ताकि तुमको कोन मिल परियो रिमेनिंग पीरियड में आईटीसी मिल परियो सो दिन छुड़ा लेता है बुझा पड़छि ओके देन can a person who has opted to pay tax under composition scheme avail ITC on his inward supply नहीं परियो कि नहीं जान छथि तार ओन पॉकेट एक्सपेंसेस तक ITC मिलियो नहीं ओके can a registered person who purchase goods from a taxable person paying tax under the composition scheme take credit on the purchase made for the composite dealer no हम जान छथि मिलुनी composite dealer इतले क्रेडिट नहीं परिबा नहीं टैक्स इनवॉइस इशू करि परियो कि नहीं तो मैंने टैक्स इनवॉइस हमें इशू करिबा नाही कोन भाई इशू करिबा नहीं तो सिंपल रीजन होची कि हमें कागु टैक्स लगे परिबा नाही कंपोजिशन स्कीम अंडर रे राइट हम कोन करिबा रे कंपोजिशन स्कीम रे टैक्स इनवॉइस इशू करिबा नाही नेक्स्ट suppose is monthly return required to be filed by the person opting to pay tax under composition scheme normally पिलाने
जीएबी ओके कंपोजिशन स्कीम नउछंदी समय कोन जीएसटीआर 4 रे नॉर्मली एनुअल रिटर्न भर दोछंदी ओके बुझि पड़छि ओके न तो समय एनुअल रिटर्न भरछंदी और क्वार्टरली रिटर्न भर दोछंदी ओके तो कंपोजिशन स्कीम निथिले तमानकु मंथली रिटर्न भरिया दरकार नै क्वार्टरली और एनुअल रिटर्न भरले ओके तो कंपोजिशन स्कीम केस में हमारे कोन करिया नि केबेले मंथली रिटर्न भरिया नि ओनली कोन क्वार्टरली और एनुअली रिटर्न भरिया ओके next in case a person has registration in multiple state can he opt for payment of tax under composition levy only in one state and not in other state এটা জানছো অলরেডি প্ল্যান है ओके कंपोजिशन स्कीम वंस ऑप्टेड कलो माने कोन पूरा एंटायर एंटिटी में एप्लीकेबल हबो गोटे स्टेट में कंपोजिशन और गोटे स्टेट में तुम कोन नॉर्मल नहीं परिबो नाही ओके तब यदि अलगा नेवर अछि ताल कोन करियो पड़ियो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करी नॉर्मल प्रोसीजर तो पड़ियो ओके नो एनी त्रिभुजी नो एनी इंटिमेशंस आई एम वन ऑलरेडी कहि द इंटिमेशन गोटे पे रिसीव होला माने कोन रे सब जगह में रिसीव कला कोई भाबी ओके next हमारा क्या है कंपोजिशन स्कीम बी अवेल if the taxable person has interstate inward supply yes interstate inward supply पे restriction नहीं interstate outward supply पे कौन अच्छे restriction अच्छी interstate inward वाले कौन नहीं करेगा समय कंपोजिशन स्कीम आराम से नहीं करेगा ओके person having same pan means कौन है ना across India तो गोटे pan का यूज होतो पूरा कौन business में ओके So, what happens if a taxable person who has opted to pay tax under composition scheme crosses the threshold limit of 1.5 crore during the financial year? So, one says scheme the lapse age. Okay, composition scheme कौन use है? Lapse age, withdraw age. Okay, तमाम तो section 900 कौन करियो पड़ियो? Business करियो पड़ियो. Okay, तो ऐसी दिला प्लान नंबर questions. Okay, तापे aggregate turnover तमाम पचास कि aggregate turnover हमें calculation scheme करिया जाता है. Okay. तो तमाम का एग्रीगेट टर्नओवर विषय कहले कोन कहले प्लान जला हम एग्रीगेट टर्नओवर नोचंदी चारटा कंपोनेंट नोचंदी कोन गोटे हला ऑल टैक्सेबल सप्लाई नोचंदी बट एक्सक्लूडिंग आरसीएम माने कोन ना आरसीएम रे जदी सप्लाई हेतिबो तार वैल्यूटा हमें ऐड करबा नाही तमे किछि जिंस परचेज करले ता ऊपर आरसीएम लागुची जति वैल्यू ऑफ तुम जिंस परचेज करछो जा ऊपर आरसीएम लागुची सेडा तुम कोन करियो एग्रीगेट टर्नओवर रे ऐड करबो नाही तने आरसीएम ऊपर टैक्स की दोची रिवर्स रे रेसिपिएंट दोची तो ऐड करियो सेडा ओके सपोज एग्जाम सप्लाई जदी थियो क्वेश्चन लेछि तले कोन करियो ताको भी ऐड कर दो एक्सेप्टेड सप्लाई बट एक्सक्लूडिंग कोन इंटरेस्ट और डिस्काउंट on loan and on loan advances or borrowings okay तीन रे कोची से एक्सपोर्ट जदी किछि दिबो सेडा ले कोन करियो ऐड करियो चार कोची स्टॉक ट्रांसफर बिटवीन branches having same pan सेडा from stock transfer between branches okay तले नॉर्मल देखो हम क्वेश्चन में तीन दे थियो सिंपल से क्वेश्चन देखियो कि ऑल taxable supply let's say rupees 40 lakhs but bracket दे दियो he included rupees 10 lakh as RCM okay तब सपोज अब तमानो एग्जाम सप्लाई देछि ओके let's say exempted supply तुम 20 lakhs देछि ओके 20 lakhs से कोइ छै कि 2 lakhs होछि तमरो कोन इंटरेस्ट ऑन लोन ओके तापर तमर प्लान सपोज हबो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस 10 lakhs देछि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस देछि रे 10 lakhs okay then let's say तमर देछि स्टॉक ट्रांसफर
50 lakhs ओके स्ट्रॉन्ग ट्रांसफर के दीजिए 50 lakhs तुमको क्वेश्चन दीजिए सीजीएसटी पेबल रुपीस लेट्स से 5 lakhs क्वेश्चन दीजिए एसजीएसटी पेबल रुपीस 5 lakh सो कुछ कैलकुलेट टर्नओवर ओके कैलकुलेट एग्रीगेट टर्नओवर तो एग्रीगेट टर्नओवर रेट कौन आसियो रे ना जतल तो माने टैक्सेबल सप्लाई नबो तार कोन करियो एचसीएम माइनस कर दो तो 4 ରୁ 10 माइनस करले केते रहियो 30 एग्जाम जतल तो माने नबो एग्जामटेड सप्लाई नबो केते अछि एग्जामटेड सप्लाई 20 अछि तायरु तमरो जति के इंटरेस्ट अछि कोन कर दो रे माइनस कर दो तापर एक्सपोर्ट अछि एक्सपोर्ट जति अछि कोन कर दो ओके दो देन स्टॉक ट्रांसफर अछि केते अछि स्टॉक ट्रांसफर 50 lakhs बट सीजीएसटी पेबल एसजीएसटी पेबल केबे भी एग्रीगेट टर्नओवर आसीबो नाही तो चारटा दिन से मिसेला सिंपल 30 50 10 60 30 90 90 ରୁ 80 ने लेके दे 108 हां नहीं लेट्स से ये होची मैन्युफैक्चर डाटा ओके ये कोन रे मैन्युफैक्चर डाटा ओके तुम जानछो मैन्युफैक्चर केस रे मैक्सिमम सर्विस के दे परियो ये 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और 5 lakhs whichever is higher एडी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज अछि पिला ने ओके केते अछि रे 10 lakhs तो एडी तुम चेक कर दो कि सर्विस लिमिट एडी चेक कर दो सर्विस लिमिट किन चेक करियो देन सर्विस लिमिट है सर्विस लिमिट है कौन रे 10% ऑफ 108 lakh ओके तो ये कहता है 10 lakh 80 और 2 रे कहते रे 5 lakhs तो whichever is higher तो एक ऐसे से 10 लाख 80,000 नहीं कि कौन दे परियो सर्विस दे परियो ये जो टैक्सेबल सप्लाई अछि एटा पूरा गुड्स रो एटा तो एग्जेम्प्टेड सप्लाई अछि एटा भी कोन गुड्स रो एटा होची कोन सर्विस रो एटा होची स्टॉक पर कोन रे गुड्स रो तो सर्विस गोटे का अछि ताको अलाउड अछि केते 10 लाख 80 से के देची 10 लाख रो तले विदिन लिमिट रे देची तार अर्थ कंपोजिशन स्कीम ये आराम से नहीं पारे बुझा पड़ची तो तुम टोटल टर्नओवर टा काढियो तर 10% नबो और 5 lakhs whichever is higher नबो आ देखियो क्वेश्चन रे एक्चुअल सर्विस से केती से लिखि दिथियो ना ऑल टैक्सेबल सप्लाई रे गुड्स सप्लाई एती हिची सर्विस सप्लाई एती हिची न लिखि दिथियो एग्जेम्प्टेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज न तो एग्जेम्प्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स न तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज से क्वेश्चन रे ऑलरेडी तमानो कोन दे दिथियो कि कोडा केती हिची करी ओके से हिसाब तुम कोन करियो पिला ने देखियो कि तक कंपोजिशन स्कीम मिल छ ना क्लियर नेक्स्ट डाउट अछि नहीं ओके मात्र मन रखियो कि चारटा दिन सगा हमें मेनली नो जान कोन टैक्सेबल सप्लाई एक्सक्लूडिंग आरसीएम एग्जाम सप्लाई एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन और डिस्काउंट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और स्टॉक ट्रांसफर ब्रांचेस बाकी सब जा टैक्सेस जाको जीएसटी जो टैक्स हाउसेस अछि से सब नो ना दिया में ओके लाइक जीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी सेस सब नो जन रे ये सब कंसीडर करबा नाही ओके ओनली हमें कंसीडर करिया कोडा से चारटा दिन सा कंसीडर करिया बुझा पड़ला नेक्स्ट डाउट अछि ओके ठीक अछि तो तमानु हे पारे क्वेश्चंस इनासियो कि तुम सब जाक टर्नओवर लिमिट दे दो ओके आ किछि इंफॉर्मेशन दबो तुम पचारियो कि ये कंपोजिशन स्कीम में एलिजिबल कि नाही को ओके से टिकट मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर हे दियो कोन देखि दो सर्विस रो लिमिटेड के देखि दो बोल से बुझा पड़छि ओके
रेस्टोरेंट हेले सर्विस लिमिट देखा दरकार नाइ रेस्टोरेंट टू अनलिमिटेड अच्छी से केते भी सर्विस दे परियो अप टू 75 अप टू 1.5 करोड़ स्पेशल कैटेगरी स्टेट 75 नॉर्मल कैटेगरी स्टेट रे 1.5 क्लियर ओके तो पिला ने हमर ए टॉपिक टा सरला ओवर ओके कोडा कंपोजिशन लेवी ओके तो टिके देखा तमर जति भी चैप्टर अछि मेनली जीएसटी अंडर हम कौन साइड लेनी तो देख दियो बोल से देखो पिलाने हमें concept of indirect taxes देखि देले ओके 1 to 16 पेज ओके डन देन तमरो इंट्रोडक्शंस टू जीएसटी लॉ देखि सारले लेवी कलेक्शंस ऑफ सीजीएसटी आईजीएसटी देखले ठीक अछि एबे हमरो नेक्स्ट चैप्टर होची हम पढिया बेसिक कांसेप्ट ऑफ टाइम प्लेस एंड वैल्यू ओके देन तमरो हम मेनली रोयो रजिस्ट्रेशन हाउ आईटीसी हाउ कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी बाकी हाउ टैक्स इनवॉइस हला और पेमेंट ऑफ टैक्स ये टॉपिक है आज तो बेसिकली टॉपिक नै जीएसटी अंडर रे ओके टाइम प्लेस वैल्यू हमें गोथर सरिया टाइम फर्स्ट पढ़िया देन हमें वैल्यू पढ़िया देन हमें प्लेस पढ़िया आउ ए जो टोटल तमरो मॉड्यूल 5 टा छै सबोड इंपोर्टेंट चैप्टर होची रजिस्ट्रेशन तमरो ओके एरे अधिक वेटेज अछि रजिस्ट्रेशन रे सबोले मिनिमम 10 मार्क्स तमो पचारछि गोटे चैप्टर ओके तो हे पारे कि माने बे रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट करि पारे न तो टाइम प्लेस वैल्यू भी स्टार्ट करि पारे ओके ओडा भी स्टार्ट करि पारे ओके तो पिला ने नेक्स्ट क्लास रे हम देखिया ठीक अछि ओडा इधर रजिस्ट्रेशन न तो हमर कोन टाइम प्लेस वैल्यू ओके आज क्लास टिके शॉर्ट रहे तो मान पई नेक्स्ट क्लास रे हमन कोडा भी गोटे स्टार्ट करिया क्लियर यदि किस डाउट थियो तो माने पछरी पारिया सर आरसीएम आबे बुझे दे कन्फ्यूज हो जाଉଛି